Hello student, today we will continue exercise 6.2 sum number 4 to 6 chapter 6 lines and angles. Sum number 4 which is on your screen. Important question: if PQ and ST are parallel to each other, PQR 110 degree and angle RST 130, we have to find angle QRS. Given from the statement, we will write as it is, same. To find angle QRS, for it we do construction. Construct a line which is parallel to PQ through point R. AB is parallel to PQ through point R. Solution: since PQ is parallel to ST, PQ is parallel to AB by construction, therefore PQ is parallel to ST is parallel to AB. Line parallel to the same line. Now I am marking here angle 1. Parallel, QR, transversal. That's why sum of these two angle is 180 degree. Reason: supplementary angles. Then value of angle 1 is 70 degree. Now I have to find angle QRS. ST is parallel to AB, then this angle equals to angle 1 plus QRS, alternate इंटीरियर एंगल. आप इसको और भी वे से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने एंगल 2 निकाल लिया, 50 का आ जाएगा, और इन तीनों एंगल का सम कर दो, स्ट्रेट एंगल, तो भी आ जाएगा 60 डिग्री. क्वेश्चन को करने के मेथड्स होते हैं बहुत, बट कंडीशन कि वो ठीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. एंगल 2 प्लस 130 इक्वल्स टू 180. रीजन: सप्लीमेंट्री एंगल. तो एंगल 2 इज 50 डिग्री. नाउ वी विल ऐड दीज थ्री. एंगल 1 प्लस QRS प्लस एंगल 2 equals to 180 straight angle. 170 ये आपने फाइंड करना है. 250 है आपके पास, इक्वल्स टू 180. सॉल्विंग. एंगल QORS 180 minus 70 minus 50, minus minus plus 120. 180 minus 120 makes 60 degree. Hence
Value of angle QRS is 60 degree. Now we comes to next question number 5. AB is parallel to CD. Angle APQ is 50 degree. We make figure. AB CD. Let point P. APQ 50 degree. PRD 127 degree. To find X and Y. Student, always try to make figure with the help of reading statement. उसके बाद आप मैच करें बुक में से कि आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया है. अगर फिगर ठीक बनता है तो इसका मतलब आपने 80% क्वेश्चन जो है वो कर लिया. फिगर राइट हैंड साइड. नाउ गिवन from the statement only. AB is parallel to CD. APQ 50. PRD 127. To find X and Y. Solution. X equals to 50. Reason. Alternate interior angles. X plus Y equals to 127. Reason. Exterior angle property. Putting. Solving. We have 77. Dear student, we can use here rough work area for minus. Answer is X 50, Y 77 is required answer. Now the next. Sum number 6. PQ and RS two mirrors parallel to each other. Make figure with help of the statement. See how. PQ RS. Parallel. An incident ray AB strikes the mirror PQ. Strikes. Takkar. AB. The reflected ray moves along the path BC. Reflect हुई along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect along the path CD. Prove that AB is parallel to CD. Given PQ is parallel to RS. To show AB is parallel to CD. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. दैट इज
draw perpendicular BM on RS and SN to PQ. Draw BM perpendicular to RS, CN perpendicular to PQ. परपेंडिकुलर का सिंबल होता है उल्टा T. Proof. BM is parallel to CN. Why? Because perpendicular distance between the parallel lines. Angle 1 will be equal to angle 2. Angle 3 will be equal to angle 4. Why? क्यों होगा ऐसा? Because angle of incident equals to angle of reflection. ऐसा हम साइंस में भी करते हैं. Angle of incident equals to angle of reflection. Similarly, angle 3 equals to angle 4. Same reason. And angle 2 equals to angle 3 because of alternate interior angles from 1, 2 and 3. Angle 1 is equals to 2. Angle 3 equals to 4. 2 3 के equal है. Then angle 1 equals to angle 4. Directly you will write here. Angle 1 equals to angle 4. Equation number 4. Now adding. Equation 3 and 4. लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 और राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे एंगल 3 प्लस 4. एंगल 1 प्लस 2 क्या बनाएगा? ABC. एंगल 3 प्लस 4 BCD. What type of these angles? These are alternate interior angles. So AB is parallel to CD by converse of parallel lines. Thank you, student. Have a nice day. God bless everyone. Keep smiling.